और गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरु जी का, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। तो संगत जी, आई विल बी स्पीकिंग मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, सो एनी फॉल्ट ऑन माई पार्ट ऑफ माइंड may please be forgiven. So I can say we are of the selected few in this world who has been accepted by Guruji in his sharan. And दूसरा धन्यवाद मैं करूंगा बड़े मंदिर का, जिसने हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों को मौका दिया कि हम गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सके। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। So I just want to tell you, when we met Guruji in 1997 at Chandigarh. Since I belong to Chandigarh, at that moment Guruji was in sector 33 and it was a auspicious day of Shivratri, and we were told to there is one satsang going on in sector 33, so you please come. There was one family from Delhi, they invited us to come with them just to have darshan of Guruji. So we went to sector 33. At that moment Shabads were going on, and I think Dolly auntie, she was reciting the Shabad. So at the very first instance my wife was mesmerized, because she is a, you can say, bhakt of Shivji, and I don't know how she got I have got the Guru, this God in the form of Guru. But since I was not that much, you can say, I don't follow these things. So I said, okay, Guruji ke paas aaye hain. But I was rather little bit surprised. Guruji was at that moment in brighter red chola, and it was shining like anything. So I was a little bit surprised. Chalo theek hai, aaye hain to theek hai. Okay, fine. Then after that satsang, after that Shivratri function, next day again my wife said that okay, let us go to Guruji. So okay, I said okay, चलते हैं गुरुजी के पास. At that time गुरबानी was going on. ठीक है, गुरुजी के पास बैठे, लंगर किया, वापस आ गए. And slowly this thing continued. And you can say, but I was not very much impressed. भी ठीक है, हम आते हैं गुरुजी के पास, ठीक है, शब्द लगते हैं, भी instead of sitting at home, चलो यहाँ पे आके गुरबानी सुनते हैं. Then people used to do satsang कि गुरुजी ने ऐसे हमारा कल्याण किया, गुरुजी ने हम पे ये कृपा करी. So we used to listen with much of anxiety कि अच्छा ऐसे गुरुजी ने ऐसे कर दिया, ये तो बहुत you can say सब कुछ कर सकते हैं. So in those days, okay fine. Then slowly we started. It was a daily affair that we used to come to Guruji. And okay, but my wife was knowing from a core of her heart that my husband is not very much interested in coming. And one fine day, she prayed to Guruji in his heart that Guruji, यहाँ तो मेरे husband का प्यार डाल दो या मेरा मोह छुड़ा दो. And now you see the result in front of you. So okay, हम गुरुजी के पास आते धीरे धीरे. अब संगत में इतना प्यार था कि we used to talk amongst each other कि हमने कहीं इतना प्यार नहीं देखा संगत में, कहीं भी ऐसा नहीं, अपनापन नहीं देखा संगत में. So okay, तो ऐसे हुआ कि एक दिन my mother, she was a heart patient, and suddenly it became very severe. So okay, we got with some approach and all that, we got her an appointment in PGI, and the doctor who examined her, he said that okay, you have to get TMT done. Okay, fine. When the TMT was being done, treadmill test, it was stopped in between by the doctor. He said that okay, you rush to emergency. So we said, what happened? So my dad asked me, what is the thing? I told my father that they are not supposed to reveal anything, but okay, we have to follow. But he said that okay. But he requested the doctor who was conducting the TMT that okay, can we come on coming Tuesday, because already we have got an appointment. So he said that okay, you can take her back home, but on your own risk. But any uncomfortable position, at any uncomfortable instance, or if she feels uncomfortable, you have to rush to the hospital. Which should I? Okay. So in those days, we used to come to Guruji. I told my dad said that आप तो गुरुजी के जाते हो, तो वहाँ पे कैसे करेंगे, कैसे आपको inform करेंगे. Okay, I said okay, I get a pager and I told him how we can operate and how you can contact me. तो आप गुरुजी के पास तो हमने जाना ही है. At that time इतना गुरुजी के हम रंग में रंगे गया था. At least I can talk of myself कि इतना रंग में रंगा गया था कि I don't wanted to miss a single day without Guruji. So he said okay.
when on this Tuesday the doctor examined, he saw her report and all that. He said that her 2 arteries are completely blocked. I can't say about other 2, but her 2 arteries are completely blocked, and that will be known only after angiography. So better you take a date for angiography and you proceed further. So then we discussed at our place, we contacted our family doctor. They said that, okay, better you get the angio done at Escorts in Delhi, because if any further treatment is required, then it is better if you get it done at Escorts. He said, okay. So my younger brother, who used to be in Delhi, he took the date and all that, and my parents went to Delhi. In the meantime, I told my wife, my auntie, that देखो गुरुजी की महिमा का सारे गुणगान करते हैं, कुछ कहते हैं हमारी किडनी ठीक कर दी, किसी की हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी, किसी का एस्मा कर दिया, और हमने खुद देखा है कि एक अंकल से ही वाज हैविंग डायबिटीज, तो गुरुजी कहते हैं अला जलेबी खा ला, सवेरे जाके चेक करा ली. तो टू अवर सरप्राइज नेक्स्ट डे ही सेड दैट गुरुजी मेरी तो शुगर नॉर्मल थी, तो क्यों ना हम मम्मी की प्रॉब्लम गुरुजी से डिस्कस करें. आई डोंट हैव द करेज टू टॉक टू गुरुजी, फ्रैंकली स्पीकिंग. बेटर यू गो एंड टॉक टू गुरुजी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. शी आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन शी एग्रीड, एंड नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू गुरुजी, इसने माथा टेका एंड शी टोल्ड गुरुजी, गुरुजी ऐसे ऐसे ना मम्मी की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी कराने के लिए बोला है. एंड गुरुजी सेड ना की है. गुरुजी यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, मतलब पंजाबी में काली बोल देती बड़ी. ही यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, so he said ना की है. She couldn't get what Guruji has said, so she said हैं जी. गुरुजी कहते ना की है. She told the name. Guruji looked for a while and said बात गल करांगे. She came back with tears in her eyes, and one auntie, Brigadier Saini's wife, Saini auntie, she came running. क्या हुआ क्या हुआ, गुरुजी ने क्या कह दिया. She said देखो गुरुजी तो सबका कल्याण करते हैं, अब मैंने मम्मी की बात करी गुरुजी से, तो गुरुजी कहते बात गल करांगे. तो चलो गुरुजी की जैसी मौज, जैसी गुरुजी की इच्छा, ठीक है जैसे. She said okay, no problem, what's the big deal in it, why you take आज्ञा at the end of संगत. जब गुरुजी आपको आज्ञा देंगे, you again discuss with him. इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया, it's okay. So she said okay fine. In the meantime, I want to tell संगत जी कि गुरुजी ने सेवा भी दे दी. So we were on cloud 9 कि अच्छा गुरुजी ने तो सेवा दे दी हमें. My wife was on cloud 9 कि मुझे तो बर्तनों की सेवा दे दी, तो she was very happy. तो जब जाने के वक्त, it was maybe around 12:30 को गुरुजी इतने के बजे ही चंडीगढ़ में आज्ञा देते थे, तो 12 or 12:30. So she when गुरुजी के पास my auntie went, तो जैसे माथा टेका, she said गुरुजी ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਗੁरुजी said ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਲਿਆਣ. He said okay. We came back, and after a couple of days when the angiography was being done, my younger brother was with my mother. So the doctor who was doing the angiography, he said, young man, who is she to you? He said, she is my mom. He said, congrats, everything is perfectly all right. These were the exact words what the doctor said to my younger brother. He came down running, told my father, and it was around 8 at that moment, or 7:30 or 8, and we were just preparing ourselves to go to Guruji. तो गुरुजी इतने बजे ही दर्शन देते थे, 8 साढ़े 8 के बीच में. So he told that ऐसे ऐसे, तो डॉक्टर ने तो ऐसे बोला ही, अरे बस गुरुजी ने तो कृपा कर दी. And when we went to Guruji, जैसे मेरी आंटी ने माथा टेका, she said, गुरुजी मम्मी की रिपोर्ट आ गई है, बिल्कुल ठीक है. गुरुजी कहते, गुरुजी तो खैर जान नहीं जानते. गुरुजी ने कहा अच्छा आ गई रिपोर्ट, तेरी सस लगती है, तेरी मां लगती है. He used to speak ठेठ पंजाबी, I can say. He simply said, अच्छा तेरी सस लगती है, तेरी मां लगती है. She said, गुरुजी सस लगती है. गुरुजी कहते अच्छा तू संतों तो सस का कल्याण कराया, नूंहां तो जैलसी कर दिया सस्सां नाल. एंड उसके बाद गुरुजी ने मेरी आंटी का नाम ही रख दिया नू सस, बैठी है नू सस. और किसी ने आना, द संगत यूज्ड टू कम, मतलब आफ्टर ए गैप ऑफ सम डेज, ए देखो ए कुड़ी एक संता तो सस का कल्याण करा के गई. एंड संगत जी, आई टेल यू, I am talking of 1997. It maybe I don't remember the month, but from 97 to till date, we haven't visited a cardiologist. No doubt, at this age, at the old age, there are multiple problems, but we haven't visited it. My mom didn't have any heart problem from that day onwards. So this is the kripa of Guruji. तो गुरुजी की तो धीरे धीरे अब जैसे हम आते रहे, तो गुरुजी के पास, गुरुजी से वैसे ही
मतलब यू कैन से हम ये नहीं कह सकते कि क्लोज आए, पर गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया एंड वी फेल्ट अवरसेल्व्स कि हाँ जी गुरुजी ने तो अपनी शरण में ले लिया। और संगत जी कभी ऐसा मौका मिल जाता था गुरुजी के पांव दबाने का, या ऐसा हम लकी अपने आप को फील करते हैं कि कभी टांगे दबाने का मौका मिल जाता था, यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। वी यूज टू हैव फ्रेग्रेंस नॉट फॉर आवर्स, फॉर इवन डेज फ्रेग्रेंस आती थी हमारे हाथों से। कभी ऐसा मौका मिल जाना गुरुजी के पांव या टांगे दबाने का। एंड माई किड्स दे वर क्वाइट यंग एट दैट टाइम एंड स्लोली दे ग्रू अप। सो व्हेन माई एल्डर सन ही वाज इन +2, सो वी आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी फर्दर क्या कराएं। गुरुजी जस्ट सेड लॉ। सेड ओके, गुरुजी ने कह दिया बस ठीक है। सो उसके बाद गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया। So when my younger son, he was in +2, तो my auntie said कि हमने बड़े बेटे के वक्त तो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो हमने पूछ लिया तो अब कैसे करें। तो ओके ठीक है, वी वर इन डायलेमा की कैसे करें क्या करें। तो सडन